Hello everyone, I am Rohit Vats and you're watching Health Plus. Today we are with Dr. Rajeev Sood, Founder Dean of Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences under RML Hospital. Welcome to the show, Doctor. Yes. So, Doctor, there are so many programs involving women's health and relatively lesser talk about men's health, though health in general is a lot talked about. But I think there should be some kind of focused programs based on men's health also. What is your opinion So about that? very well said. Actually, the problem is that men was talked about a lot in earlier phases. Maybe you can say 200 years back. And if you see the medical text or surgeries and every aspect of the healthcare, it was related to men. And there was no awareness, and even in some of the countries, women were not allowed to talk about the health or their body. But then NGO movements and also some of the awareness and books and all were generated by the reformers, and ultimately women health started getting the attention. You know that women and child health big programs are there. Yes. And we are talking about their mortality, child mortality, women mortality, childbirth related mortality. So many special events were there. You see, when men is born or the boy is born, throughout life there are very few interactions with the healthcare system. Right. But when the women is there or female child is there, then it starts like women is scared at the time of menarche, when the period start, first interaction, maybe the second you can say after birth. And after that there can be another at the time of marriage, childbirth, at the time of menopause. So many opportunities are there to visit doctor. But man himself thinks that he is a superior sex and he doesn't not, need care. And also men feel that he doesn't need even insured. Right. So men is overconfident but suffering more. So I'll say that men suffer more. Suffer means Physically physically, suffer. and suffer more and die early. There are countries like in India, or average 5 years before men is dying, and lifespan is shorter. But there are countries like Russia and some countries where men is dying even 12 years before. That's a huge difference. So what happens? That aging of the global population is going on. We are now better equipped healthcare wise. In India also, any country is aging country if more than 7% of the population is above the age of 60. So India, we have crossed 8.5 or 9%. So we are aging country. But before we are becoming the rich country, before we are becoming the urbanized country, we are becoming the feminized country. Right. After the age of say 80, I'll give you, at the time of birth, it is the ratio is almost 1:1. But when you reach the age of 80, it becomes 8:2. Two men survive and 8 women, and after 100 it is 1:9. 9. One male and 9. So what is happening? If I'll give you the scenario, you start thinking around you, your family, your friends, your society, you will find that more women are surviving. There are more widows. Right. More of women are surviving than men in your elderly Household relation. vicinity. So it is important point, and we need to take care as far as the country's economy, GDP, everything is affected. So when you ask that why we are not caring for men, we used to care. We have again started caring now. Awareness is there in between for 200 years because women was socially deprived. Whole scenario has gone female oriented. Right. So, doctor, now when we are talking about men's health, I was just wondering that what are the areas that should be taken care of, especially the serious areas? First, we'll start from the birth. Men is inheritedly or genetically, the genome is weaker than women. When men is when the boy is born,
and female is child is born, then the female child just born is equal to in the immunity and protection equal to 3-week-old male child. आप कह रहे हैं कि लड़कों की इम्यूनिटी लड़कियों के मुकाबले कम होती है। बहुत कम होती है। 3 हफ्ते की जो लाइफ में मेल को इम्यूनिटी मिलती है वो लड़की का पैदा होते ही होती है उसके पास। और उसके अंदर भी जेनेटिकली कुछ ऐसा है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं या हमारे जो सेक्स डिटर्मिनिंग पेयर है क्रोमोसोम्स का, जिसको XY बोलते हैं, सबको मालूम है जी। उसमें Y बहुत छोटा है और X जो है वीमेन X एंड X होता है और जो मेल है वो X एंड Y है। X के ऊपर अराउंड 3000 जीन्स होते हैं और आप समझ सकते हैं आप, और Y के ऊपर 50। काफ़ी डिफरेंस है। और 50 में भी ज़्यादातर डिजीज़ कैरियर होते हैं। अब आप डिफरेंस सोचिए कि जब उसमें XX है फीमेल में, 2X हैं, तो वो एक लग्जरी है, उनके पास 3000 और 3000 है, और मेल के पास 3000 है और 50 है, और वो 50 में भी डिजीज़ कैरिंग जीन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो होता क्या है कि अलोंग विद एवोल्यूशन जो हो रहा है उसमें ये वाई का जो लिम्ब है ना, ये छोटा होता जा रहा है, और ये भी फियर किया जा रहा है कि अगले 100 मिलियन साल में वो इट में डिसअपियर। एंड आपने देखा हुआ कुछ एनिमल्स हैं जो कि एक सिंगल सेक्स की तरह पैदा होते हैं, और जब ग्रोथ होती है और उसमें फिर जब रिप्रोडक्टिव एज आती है तब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं मेल और फीमेल में। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले, अभी नहीं, डरने की बात नहीं है, मैन इज एंडेंजर्ड सेक्स। हम लोग बात कर रहे थे कि कौन से खास वो अंग है जिसका एक आदमी के हेल्थ के लिए, फॉर मेंस हेल्थ, दोज ऑर्गन्स आर इम्पॉर्टेंट। देखिए, आप जो हेल्थ है, हेल्थ को आप समझिए। हेल्थ हमारा एक तो जीनोम मैंने बात की, दूसरा हमारी इन्वायरमेंट है, तीसरा हमारी सोसाइटी, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का, जो उसमें हार्मोन्स हैं। तो इन सब का आपस में इंटरेक्शन होता है, उससे हमारी मेल और फीमेल की पर्सनैलिटी बनती है, उससे मेल एंड फीमेल का जीनोम बनता है, सेक्स बनता है, इंडिविजुअल्स बनते हैं। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, जो जेनेटिक बेसिस बताया, आपका जो लाइफस्टाइल है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और लाइफस्टाइल के बाद आपका जो भी आप ट्रीटमेंट वगैरह की, जैसे मैंने बताया, मेंटल हेल्थ है, ये सफरर है मैन। हर चीज़, आप कोई भी एस्पेक्ट लीजिए। अब आपने पूछा कि कौन कौन से एस्पेक्ट, सुसाइड्स जो हैं वो मेन में 3 टाइम्स होते हैं फीमेल से। जो आपके लोनर्स हैं या जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो आपको मेल ज़्यादा मिलेंगे। जो आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, इसमें 70 to 80% मेल्स होते हैं जिनको इंजरीज होती हैं, और फेटल इंजरीज होती हैं। मेल अग्रेसिव सेक्स है बिकॉज ऑफ द, मैंने हार्मोन्स की बात की, मेल हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन्स हैं, जो कि उसको ज़्यादा रिस्क टेकिंग बनाता है। आपने बैटल इंजरीज देखी होंगी, ऑक्यूपेशनल इंजरीज हैं, बैटल में ज़्यादातर मेल हैं, ऑक्यूपेशनल हैं जो डेंजरस होता है। आप घर में भी अगर आपको देखना है कि ये कोई डिफ़िकल्ट काम कराना है, आप अपनी डॉटर को कहेंगे तुम रहने दो, ये कर लेगा। तो ये तो एक कंडीशनिंग है, एक कंडीशनिंग है, और जो मैन है वो इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और उसका एक बेसिकली ये उसके जो हार्मोन्स हैं, उसका ब्रेन है, ब्रेन की जो एनाटॉमी है, इवन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल का अलग होता है। कुछ पोर्शंस, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच आर लेस डेवलप इन मेल, दे आर मोर डेवलप इन फीमेल। इस तरीके से आप ये देखिए कि एनाटॉमिकली डिफरेंस है, हार्मोन डिफरेंस है, आपका सोसाइटी के बिलीव्स में डिफरेंस है, और फिर जो अल्टीमेटली जो एक्शंस होते हैं, जो इस सब का नेट रिजल्ट होता है, उसमें मेल इज मोर प्रोन टू रिस्क, मेल प्रोन टू डिजीज, मेल मोर प्रोन टू द लाइफस्टाइल डिजीजेज, मे बी बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज आल्सो। So doctor, what do men do to take good care of their kidneys and their overall health? What should they do? सबसे पहले जो आपका जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद तो जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह जो है वो तो एक बिल्कुल अलग एरिया है हेल्थ का।
उसके बाद आपको लाइफस्टाइल एंड डाइट, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एंड वी हैव टू बी स्पेशली टेकिंग केयर ऑफ दैट। उसके बाद आपको फ्लूइड्स इतना लेना है कि द यूरिन शुड बी वाइट। आपको डाइट और एक्सरसाइज के बारे में मैं आप बता दूं, हम मैन की बात कर रहे हैं, यूजुअली ये बात नहीं आती, जो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि आजकल अक्सर ऐसे केसेस सुनने को आते हैं। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके स्टेम सेल्स होते हैं, आवर स्टेम सेल्स गेट बर्न्ड, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंड दोज हु आर मसल बिल्डर्स और ये सब करते हैं, वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। तो आपको एक बैलेंस्ड एक्सरसाइज, बैलेंस्ड बॉडी बिल्डिंग ये ज़रूरी है। और उसके साथ जो आप हाई प्रोटीन से लेते हैं, उन हाई प्रोटीन से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में। आपने देखा होगा कि पेशेंट्स आते हैं हमारे, वो उनसे हम पहले पूछते हैं आपका यूरिक एसिड ज़्यादा, आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स किस तरह के ले रहे हैं। तो यूरिया एंड क्रेटिनिन अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो वो भी किडनी को, जॉइंट्स को, मसल्स को, हार्ट को, सबको डैमेज करते हैं। तो ये डाइट और मेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अर्ली डायग्नोसिस, अवेयरनेस, मैंने आपको बताया कि मैन अपनी केयर नहीं करता, तो वो एक ज़रूरी है। किडनी से रिलेटेड तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर को इग्नोर करेंगे कि दवाई खाएंगे या नहीं खाएंगे, या फिर आप डायबिटीज़ को इग्नोर करेंगे, तो किडनी फेलियर्स में जा रहे हैं। Before wrapping up, I would just like to ask you about what is your message to men? What should they do? See, men is at risk, they should understand. The mental health is very important topic. And I told you that when the child is born, there may be autism 10 times, 3 times or 10 times Asperger's disease is more in men. So all these problems along with the adult onset problems are more in men. They should be aware. They should take care of themselves. They should visit doctor regularly. They should believe in the insurance, and they should believe that they need to take care of their own health. Nobody else is going to take care. If you are in pain or you are suffering, you don't feel that I'm men and I'll do everything. Everybody is vulnerable and they should everybody is vulnerable, and they should be taken care. And metabolic syndrome important. India is number 2 in smoking in the world, and this is a menace which is affecting every organ, right from the brain to the sexual health. Everything is affected. Substance abuse is to be reduced. Now, earlier our age span was around 60, but now as our age is increasing, on the line of Western countries, even colonic cancer and all are increasing. So spirits, which we are using as a social... By spirit you mean alcohol? Alcohol. So these spirits are to be limited, and colonoscopy may be in outside world, Western world, every 5 years we are doing colonoscopy. And the time is coming when in India also that will be required. And for the prostate health, that is very, very important for male, because prostate is a small gland, big problems, prostate enlargement, benign, and after that there are chances of the cancer, and this is a silent cancer which may be diagnosed sometime not because of the urinary problem, because of the bone pains, metastasis, the spread in the body. Thank you so much, doctor, for your time. We will soon come up with another episode with another expert. Till then, thank you.